अभी देखिए। So today we are going to discuss biology, one of the important topic, which is deficiency and diseases. ये उस पे डिपेंडेंट है कि किस डिफिशियंसी की वजह से आपको कौन सा डिसीजेस होगा। डिफिशियंसी कैन बी ऑफ विटामिन्स, ऑफ मिनरल्स और ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। फर्स्टली आई एम गिविंग यू द चार्ट which will tell you all of these diseases. ठीक है? I'm writing it here. I'm writing it here the vitamin and here I'm writing the diseases. Okay. ओके, तो रेटिनॉल या फिर विटामिन ए की वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, विटामिन बी वन की वजह से क्या होता है? बी वन की वजह से होता है वेरी वेरी caused in the eyes. बी टू की वजह से होता है रिटार्डेड ग्रोथ। रिटार्डेड ग्रोथ दैट मीन्स आपकी ग्रोथ है ना वो रुक जाती है फॉर द स्पेसिफिक टाइम और फॉर द लाइफ टाइम। रिटार्डेड ग्रोथ या भी स्टार्टेड ग्रोथ भी बोल सकते हो। ओके, रिटार्डेड ग्रोथ या भी बैड स्किन जो होती है ना वो इस विटामिन के वजह से, विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से होती है। ठीक है, विटामिन की वजह से, विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से। देन नेक्स्ट बी12। बी12 इज ड्यू टू बी12 की वजह से होता है एनीमिया। एनीमिया इज अ ब्लड काइंड ऑफ डिसीज। ठीक है, विटामिन सी के वजह से होता है, डेफिशिएंसी के वजह से होता है स्कर्वी। स्कर्वी इज अ स्किन डिसीज। एंड देन नेक्स्ट इज डी, विटामिन डी। इसके डेफिशिएंसी की वजह से होता है रिकेट्स। रिकेट्स इज अगेन अ स्किन डिसीज। ओके, प्लीज राइट इट डाउन or take a screenshot of it. Next is vitamin K. विटामिन के की वजह से होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। टिल टुडे व्हाट वी आर कंसीडरिंग की प्लेटलेट्स के डिफिशियंसी की वजह से अगर आपकी बॉडी में इनफ प्लेटलेट्स ना हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग ठीक से नहीं होता। बट ये विटामिन के आपकी बॉडी में इनफ प्रेजेंट नहीं तो भी आपको एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है। अभी मिनरल्स देखते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अभी मिनरल्स देखते हैं। अब तक के जो थे वो क्या थे? विटामिन्स। अभी हम देखेंगे मिनरल्स के डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिसीज होता है। लेट्स राइट इट विद अ डिफरेंट पेन। ओके, कैल्शियम। कैल्शियम के डेफिशिएंसी की वजह से ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स मींस आपका जो बोन्स होते हैं ना उनकी एबिलिटी धीरे धीरे लूज हो जाने लगती है, कम हो जाने लगते हैं, जिससे आपको फ्रैक्चर वगैरह ऐसे चीजें बहुत जल्दी होने लगती है। या फिर आप कहीं पे गिरोगे तो दैट कैन बी डेंजरस फॉर योर बोन्स, या फिर ब्रिटलनेस आ जाता है बोन्स में। ओके, या फिर
एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। एक्सेसिव का स्पेलिंग है रॉन्ग, excessive, yeah, excessive. And then phosphorus. Phosphorus is one of the important mineral in our body. Okay, from where do we get these minerals? From water, from vegetables, from the sprouts, from the nuts we eat, or from any kind of nutrients we take, or any kind of proteins we take. इसकी वजह से होता है बैड एंड देन बोथ बोथ को भी अफेक्ट करता है। अगर आपकी बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ फास्फोरस नहीं है, इट कैन कॉज बैड एंड देन नेक्स्ट आयरन। आयरन की वजह से अगेन एनीमिया। गर्ल्स में बहुत आयरन डिफिशियंसी होता है बिकॉज while having while having lots of मतलब एक्सेस हो जाने के बाद में अगर आपने बहुत सारा काम किया ठीक है, उसके बाद में आपको मोस्टली गर्ल्स को आयरन डिफिशियंसी होने लगती है। आयरन डिफिशियंसी ऐसे क्या होता है कि चक्कर आने लगते हैं या फिर फेंट होने लगते हैं हम, ठीक है। प्लीज टेक a screenshot of it and then we'll move further. Okay. Another is iodine. आयोडीन की वजह से क्या होता है गोइटर। गोइटर इज सीवियर डिसीज। ओके, और या फिर एनलार्ज थायराइड। ओके, कॉपर की वजह से क्या होता है लो एपेटाइट। लो एपेटाइट का मतलब है आपको भूख बहुत कम लगने लगती है, ठीक है, भूख प्यास बहुत कम हो जाती है, दैट इज लो एपेटाइट। लो एपेटाइट को माल न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। अगर आप इनफ इनफ इनटेक नहीं है आपका फूड का तो इट कैन कॉज अ माल न्यूट्रिशन। जो जो बच्चों का ग्रोइंग एज रहता है ना उनमें माल न्यूट्रिशन होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। अगर वो बच्चा इनफ न्यूट्रिएंट्स इनफ मिनरल्स कंज्यूम नहीं कर रहा है तो इट कैन कॉज अ माल न्यूट्रिशन। ये कैसे माल न्यूट्रिशन? तो आपके जो स्टमक का साइज बढ़ जाएगा, आपके बोन्स जो है बहुत पतले होने लगेंगे, ठीक है। ओके, पीपीटी, ठीक है, दोज वर दी डिफिशियंसी, ठीक है, ये आपने सब लिख लिया है और अदरवाइज प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Move to the PPT. So, the first question is, which of the following is a communicable disease? Communicable and non-communicable diseases क्या होते हैं? Communicable disease that means अगर एक आदमी को वो हो गया, एक पर्सन को हो गया, सॉरी, तो वो बाकी के लोग को भी होने लगेगा। जैसे कि आपके फैमिली में अगर एक लोग को फीवर आ रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, दूसरे को भी आ जाएगा, मम्मी को भी आ जाएगा, पापा को भी हो जाएगा, है ना, थोड़े दिन के बाद में कम्युनिकेबल डिसीजेस। या फिर कोल्ड हो गया किसी को, तो कोल्ड क्या होता है, कोल्ड भी बहुत जल्दी फैलता है, एंड देन एक को कोल्ड हो गया तो पूरे फैमिली को कोल्ड होना निश्चित है। सो दैट इज काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस फैलते हैं, वो कौन से हैं? जी फीवर, कोल्ड, कफ, these diseases are spread, ठीक है, that's why they are called communicable disease. So what are non-communicable disease? These diseases cannot spread through the touch, through the utensils or through the stuff we are using of infected person. But इनमें कैसा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में, जैसे कि एड्स, एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट
या फिर ब्लड ट्रांसफर। अगर आप कहाँ पे गए, हॉस्पिटल में गए हो और सपोज डॉक्टर जो है उसने न्यू नहीं यूज किया, वही नीडल यूज किया है जिससे उन्होंने पहले पर्सन को इंजेक्ट किया है, ठीक है। तो उस पे ब्लड के ट्रेसेस तो होंगे फॉर ऑब्वियस, ब्लड के ट्रेसेस होंगे तो ब्लड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द नीडल, राइट। तो अगर उस पहले वाले पर्सन को एचआईवी है या एड्स है तो वो आपको भी हो सकता है, ठीक है। आपको इन द सेंस जो पर्सन को वो नीडल यूज कर रहे हैं उनको भी हो सकता है। दैट इज काइंड ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ओके। ये या फिर वायरस से भी कह सकते हो, वायरस से जो डिसीज होता है वो समटाइम्स कम्युनिकेबल होते हैं, जैसे कि कोविड था। कोविड इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। अगर आप कोविड पर्सन के कांटेक्ट में होंगे ज्यादा देर तो इट कैन कॉज यू कोविड एज वेल, ठीक है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड। डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। व्हाई? अगर अगर किसी एक्स पर्सन को डायबिटीज है, आई एम स्टेइंग इन द कांटेक्ट ऑफ हिम और हर, तो मुझे डायबिटीज नहीं हो सकता है। डायबिटीज कैसे कॉज होता है? इंसुलिन के बढ़ने की वजह से, ठीक है। इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है उनके बढ़ने की वजह से डायबिटीज होता है। अभी हार्मोनल बैलेंस तो अपने बॉडी पे डिपेंड करता है ऑल द वे, राइट। किसी दूसरे के ऊपर नहीं डिपेंड करता। तो दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अस्थमा, अस्थमा ये तो आपको अपने आपको तो पता ही होगा। अस्थमा, अगर आप अस्थमा पेशेंट के साइड में भी रह रहे हो तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप डायबिटीज पेशेंट के साइड में रह रहे थे तो कुछ फर्क पड़ रहा था क्या? नो। तो अस्थमा पेशेंट के साइड में रहोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सो दैट इज काइंड ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। एंड देन लेट्स कम हियर इन स्कर्वी। यस, स्कर्वी के यहाँ पे क्या होता है? स्कर्वी इज अ स्किन काइंड ऑफ डिसीज, ठीक है। इसमें रैशेस होने लगते हैं स्किन पे, आई इरिटेशन होता है, ठीक है, हेडेक होता है। एंड देन दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ स्कर्वी। बट ये स्कर्वी कम्युनिकेबल डिसीजेस नहीं है, ठीक है। तो द मिजल्स, मिजल्स का बीच में ये भी आया था, व्हाट वी कॉल इट अ वैक्सीन, क्योंकि बाद में विजिबल होने लगा मिजल्स रूबेला। ये बीच में बच्चों के अंडर बहुत फैला था। बच्चों के अंडर इन द सेंस जो 10 साल के 12 साल के बच्चे हैं उनमें बहुत देखा गया था मिजल्स रूबेला। तो दैट्स व्हाई द वैक्सीन भी शुरू की गई थी मिजल्स के लिए, ठीक है। So measles rubella is kind of communicable disease. Okay, so the answer is measles rubella. Rubella is a virus. Measles is a disease. Okay, that's why I'm saying measles rubella. Don't get confused in it. तो बाकी के जो है वो क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो कि पर्सन से दूसरे पर्सन को कांटेक्ट में आने से फैलते नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, डन। नेक्स्ट, which of the following is not a symptom of Wilson's disease? अभी आपको मैं बताऊंगी कि विल्सन्स डिसीज में सिम्टम्स क्या नहीं है, इनमें से वो पूछा, ठीक है। लेट्स रीड द ऑप्शन फर्स्ट। प्रॉब्लम्स विद स्पीच, स्वेलिंग और फिजिकल कोऑर्डिनेशन, या फिर बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय में परेशानी, ओके। The next is uncontrolled movements और muscle stiffness। muscle stiffness का मतलब है कभी कभी आपको भी हो जाता है ना muscle stiffness। इट मीन्स मसल्स पूरे ऐसे पूरे, हम बोलते हैं ना कि पूरा स्टिफ होने लगता है या फिर हिलते नहीं है इजीली। जैसे कि हम लोग बहुत देर एक चेयर पे बैठे रहे, व्हाट इट कैन कॉज कि जल्दी उठ, मतलब उठने के टाइम पे प्रॉब्लम होता है, राइट, क्योंकि मसल स्टिफ हो जाता है। उस मोमेंट में अपन लोग ज्यादा देर बैठ गए ना तो मसल स्टीफनेस आने लगती है या फिर मसल स्टीफ हो जाता है। उससे क्या होता है कि उठने बैठने में जल्दी प्रॉब्लम होता है। फ्लूइड बिल्डअप इन द लेग्स और फ्लूइड बिल्डअप का मतलब क्या है? ये जो एब्डोमेन है, लेग्स है, वहां पे फ्लूइड बिल्डअप होना मतलब
लिक्विड फॉर्मुलेशन ज्यादा होना, ठीक है, एंड दैट इज अ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का कॉज क्या था? विटामिन ए, ठीक है, आपने लिख लिया होगा तो प्लीज चेक इट आउट। विटामिन ए इज अ कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस अगेन। तो इनमें से नाइट ब्लाइंडनेस जो है ना वो विल्सन्स डिसीज का सिम्टम नहीं है। व्हाट इज सिम्टम फर्स्ट? सिम्टम मतलब, ठीक है, जैसे कोविड के टाइम पे सिम्टम्स क्या दिखते थे? हाई फीवर, राइट, हाई फीवर, या फिर कोल्ड फॉर सो मेनी डेज, एंड देन वर्ड्स काम नहीं कर रहे थे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स काम नहीं करते, एंड देन ठंड लगने लगती है, दैट वाज अ सिम्पटम ऑफ कोविड, ठीक है, लक्षण, ठीक है। तो इनमें से नाइट ब्लाइंडनेस इज नॉट अ लक्षण ऑफ विल्सन्स डिसीज, ओके। So the option is fourth, night blindness. Night blindness is not a symptom of Wilson's disease. Okay, let's move further. The deficiency of nutrient causes night blindness. अभी डिस्कस किया। Yeah, so the deficiency of which nutrient causes night blindness? तो आपने लिखा भी होगा या फिर आपके पास स्क्रीनशॉट होगा तो प्लीज चेक इट आउट। द आंसर इज दिस, विटामिन ए या फिर विटामिन ए, जिसके वजह से, जिसकी डिफिशियंसी की वजह से आपको क्या होता है? नाइट ब्लाइंड। नाइट ब्लाइंड सेंस क्या कंडीशन होती है? आपको रात में ना दिखता नहीं है, रात में तो किसी को भी दिखता नहीं है, ठीक है, लाइट्स ऑफ होता है, बट आपको क्या होता है? आप अगर रात में भी थोड़े थोड़े आंखें खोलोगे ना तो व्हाट इज, आपको जो डार्क कलर होंगे जैसे कि व्हाइट कलर, रेड कलर, ये ना दिखते हैं आपके आंखों को इन द नाइट एज वेल, ठीक है। बट इन लोगों को ये नहीं दिखते, कुछ भी नहीं दिखता है, फुल ब्लैंक, दैट इज कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। इट कॉजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ओके। सो द आंसर इज लास्ट वन, डी वन, विटामिन ए, ओके। Move to the next question. Which of the following is not a waterborne disease? इनमें कौन सा waterborne disease नहीं? Waterborne disease भी होते हैं. There are two kinds of disease. No, one is waterborne disease and one is airborne disease. मतलब जो एयर के जो वायरसेस एयर में प्रेजेंट होते हैं, एंड देन एयर में प्रेजेंट हम लोग कांटेक्ट में आते ही वो वायरस अपने हर्ट करते हैं, के बाद में वो डिसीज कॉज करते हैं। देम आर वाटर बोर्न डिसीज, जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर के वजह से होते हैं, ठीक है। सो विच ऑफ देम इज नॉट अ वाटर बोर्न डिसीज, ठीक है। इनमें से कौन सा वाटर बोर्न डिसीज नहीं है? So let's start from the last. Cholera. Cholera is one of the waterborne disease we all know. अगर आप गंदा पानी पियोगे तो that can cause a cholera. Hepatitis. Hepatitis causes due to what? It also hepatitis A, hepatitis T something caused due to uh, virus. Yes. So this is not a waterborne disease. Sorry. This is not a waterborne disease पूछा है ना? So hepatitis is a waterborne disease. Sorry, hepatitis A and hepatitis B can be caused with infection of water. Mumps is what? Mumps is this कि आपके गले पे है ना मम्प आने लगता है। मम्प इन द सेंस एक क्लॉट जैसा हो जाता है अंदर, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे स्वेलिंग होती है, so that is mump. Typhoid also causes due to water. So here the mumps is not a waterborne disease. Okay, so the right option is option 2. Mump is not a waterborne disease, and all the others are what? Waterborne diseases. Please write it down and note it down. Waterborne मतलब water की वजह से जन्मे हुए. Change the pain, okay? Without me. Yeah, that is it.
Please write it down then. आपने लिख लिया और please take a screenshot of these questions because we are discussing biology after 3 weeks, I guess. Okay, please make it possible to write all of the questions I'm giving to you. The Basal Calamite Gurine vaccine, popularly called BCG vaccine, is a vaccine to prevent which of these diseases? Common vaccine है, ठीक है, B injection, ठीक है, ये बहुत एक important जो बच्चों को फर्स्ट टू 10 years के दी जाती है to prevent what the question they are asking is इनमें से क्या प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है. So the right option is this tuberculosis से बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है. कौन सी वैक्सीन? BCG. The full form of BCG is here. Please write down this full form as well. And the option is this tuberculosis. BCG vaccine is given to the children to prevent them from tuberculosis. Okay. Yeah. Then we move to the next. Which part of the human body gets affected? Osteoporosis. Illness. मतलब ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज में आपका कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है? The body parts given here in the options are bones, lungs, brain, and kidney. Please don't use your phones to search it down, okay? Osteoporosis is caused due to this bones. ठीक है, bones cause होता है. इससे क्या होता है, bones की जो ना efficiency है वो कम हो जाती है. The right option is your bones. बोन्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है. इसकी एफिशिएंसी कम होने की वजह से आपको बोन्स को ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है कि आपको बोन्स बहुत जल्दी ब्रेक होने का या फिर फ्रैक्चर वगैरह होने का. ठीक है, द ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज बोन्स के इलनेस की वजह से होती है. ठीक है. Yep. Which of the following is an X-linked recessive disorder caused by the deficiency of functional plasma clotting factor? A. Which may be inherited or arise from spontaneous mutation. ठीक है, अभी spontaneous mutation ये genes का part है. The options are multiple myeloma, leukemia, venous thrombosis, hemophilia. These are all blood disease. Okay. So पहला multiple myeloma में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये it is a kind of cancer. ठीक है, it is a kind of blood cancer. Leukemia is also considered as a blood cancer. ठीक है, ये जो venous thrombosis है, इसमें veins में clot आ जाता है. क्लॉट इन द सेंस क्लॉट आने के बाद में वेन्स का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता. इट कैन बी डेंजरस, इट कैन कॉज अ फेटल डेथ. ठीक है, एंड द हीमोफीलिया इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, बिकॉज ये जो कंडीशन होता है हीमोफीलिया में देखा जाता है, दैट्स व्हाई द हीमोफीलिया इज
Right option here. Okay, chalo, let's move to the next. Please write it down. So the right option is this last one, hemophilia. Please write it down. Write it down. Chalo, please move to the next. Hypokalemia is caused by the deficiency of इनमें से कौन सा डिफिशिएंट आयरन के सॉरी मिनरल के डिफिशिएंसी के वजह से हाइपोकैलेमिया डिसीज कंडीशन कॉज होता है द राइट आंसर इज पोटेशियम potassium is essential micronutrient in our body macronutrient in our body the deficiency of potassium can cause you this hypokalemia note it down write it down the right answer is potassium okay let's move to the next is an inherited blood disorder due to which people suffering from this condition are unable to make hemoglobin इनमें से कौन से कंडीशन में पीपल्स आर अनेबल टू मेक हीमोग्लोबिन इनमें से कौन सा डिसऑर्डर ऐसा है जिसमें सिम्टम क्या होता है कि हीमोग्लोबिन प्रिपरेशन बॉडी का बहुत लूज हो जाता है या फिर कम हो जाता है ठीक है द आंसर इज थैलेसेमिया राइट इट डाउन थैलेसेमिया these names must be new for you बोन मैरो फेलियर आप बता ही सकते हो बोन मैरो फेलियर का मतलब क्या है आपका जो बोन मैरो है ना मतलब बोन के अंदर भी आपको पता है बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं सो बोन मैरो फेलियर इज दैट काइंड ऑफ डिसीज इन विच रुको स्ट्रोक में क्या होता है स्ट्रोक में आपका हाइपरटेंशन का कंडीशन होता है जैसे कि आप बोलते हैं ना हाइपरटेंशन हो जा रहा है हाइपरटेंशन इज नॉट काइंड ऑफ टेंशन इट इज अ काइंड ऑफ अटैक ठीक है आपका क्या होता है प्रेशर हार्ट में प्रेशर की वजह से बढ़ने की वजह से स्ट्रोक आ जाता है ठीक है ये स्ट्रोक भी अलग अलग प्रकार के रहते हैं किडनी स्ट्रोक भी रहता है ब्रेन स्ट्रोक भी रहता है ठीक है तो स्ट्रोक में हीमोग्लोबिन का कोई ये नहीं होता हिस्सेदारी नहीं होती thrombosis we have discussed it before thrombosis is kind of clotting veins में clotting आ जाता है blood का clot तैयार हो जाता है जिससे अपना blood जो है वो circulation ठीक से नहीं होता that is due to thrombosis so the right answer here is thalassemia write it down please
Okay, move to the next. Which of the following is a vector of malaria? ये तो आपको सबको ही मालूम होगा, ऑलमोस्ट सबको. What is the easiest question? We have learned it in our eighth standard, I guess. ठीक है. So the answer is this. Anopheles mosquito. ये Anopheles mosquito भी होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए. That is a vector of malaria. अभी मलेरिया में भी ये मस्किटो क्या काम करता है, वेक्टर का काम करता है. सपोज आपके बॉडी में मलेरिया होता है, ऐसे नहीं होता कि ये मच्छर ने आके काट लिया, ठीक है, हो गया मलेरिया, ऐसे नहीं होता. आपके बॉडी में ऐसी सेल्स बननी चाहिए जिससे ये मच्छर के काटने के वेक्टर का रिएक्शन होता है. इफ रिएक्शन पॉसिबल हो गया देन आपको ये मलेरिया होता है. ठीक है, ऐसे ही मच्छर ने आके काट लिया देन मलेरिया नहीं होता. ठीक है, ओनली फीमेल एनाफिलिस मस्किटो, यू हैव टू राइट योर फीमेल, not due to male. Okay. The malaria is caused due to biting of or vector of female anopheles mosquito. Okay. Chalo, next. Poor vision in humans can be due to the deficiency of this विटामिन ए. विटामिन ए से क्या होता है, जो भी आई के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो सब विटामिन ए के डिफिशियंसी की वजह से होता है. एंड आई रिमेम्बर मैंने पिछले टाइम आपको सोर्स भी दिए थे, विटामिन ए का सोर्स, बी का सोर्स. तो अगर आप वो कंटेंट प्रॉपरली नहीं लोगे, प्रॉपरली नहीं कंज्यूम कर रहे हो, so it can cause you this. The answer here is vitamin A. Poor eyesight की वजह ये होती है. ठीक है, let's move to the next. Is a commonly used medicine that can help treat pain and reduce high body temperature. इनमें से कौन सा ऐसा डिसीज है जो हम कॉमनली लेते हैं? कॉमनली लेते हैं इन द सेंस व्हाट, कि हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, कॉमनली लेते हैं मतलब कॉमनली हम लोग किसके लिए लेते हैं, जो फीवर वगैरह आया है ना, या फिर कॉमन फीवर, नॉर्मल फीवर, हम लोग का प्रेफरेंस क्या होता है? पैरासिटामॉल. पैरासिटामॉल. अगर सर्दी हो गया तो पैरासिटामॉल लेते हैं, बुखार आ गया पैरासिटामॉल लेते हैं. ठीक है, द राइट ऑप्शन हियर इज पैरासिटामॉल. ये नॉर्मल बॉडी, आई मीन थोड़ा हाई बॉडी टेम्परेचर के लिए, कोल्ड के लिए, हेडेक के लिए कॉमन एक, जैसे कि इसको क्या बोला जाता है पता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो एक टैबलेट बहुत सारी चीजों का काम करती है. ठीक है, जैसे क्रोसिन. क्रोसिन इज काइंड ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. पैरासिटामॉल इज काइंड ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ये डोलो डोलो इज काइंड ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक.
ये ये मेडिसिन हम लोग कौन सी चीजों के लिए लेते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए लेते हैं, राइट? जैसे कि सर दर्द हुआ, जैसे कि बुखार हुआ, जैसे कि खांसी, ठीक है? इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या लेते हैं? दिस paracetamol, dolo, crocin, this kind of broad spectrum antibiotics can be taken for these diseases, common fever या फिर इन चीजों के लिए, ठीक है? The answer here is paracetamol. Okay, next. Diabetes is a condition in which the level of an individual's blood becomes too high. इनमें से किसका लेवल हाई होता है जब डायबिटीज होता है? अरे ऑप्शन भी सही है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का लेवल अगर बॉडी में इंक्रीज हो गया तो क्या होता है? डायबिटीज होता है। क्या होता है? डायबिटीज, या ये भी फॉर्म्स ऑफ शुगर है, बट ग्लूकोज स्पेसिफिकली जब बॉडी में बनना शुरू होता है ड्यू टू शक्कर और ड्यू टू एनी सोर्स ऑफ ग्लूकोज, तो क्या होता है? डायबिटीज, ठीक है? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, आपको पता ही होगा। Which of the following factors does not affect the level of glycated hemoglobin? इनमें से कौन सा फैक्टर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन पे असर नहीं करता? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, व्हाट डज दैट मीन? दैट इज मीन कि शुगर कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, ग्लाइकेटेड मतलब ग्लूकोज कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। तो इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है? ब्लड डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, मेमोरी लॉस, प्रेगनेंसी। मेमोरी लॉस क्यों? मेमोरी लॉस, अभी इसका आंसर मेमोरी लॉस क्यों है? मेमोरी लॉस का ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन से कुछ संबंध नहीं है, ठीक है? बाकी चीजों पे अफेक्ट कर सकता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, बट मेमोरी लॉस पे उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। दैट्स व्हाई द राइट ऑप्शन हियर इज हीमोग्लोबिन, ओके? आई मीन सॉरी, मेमोरी लॉस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Sorry. Nyctophobia is a fear of, nyctophobia obviously the fear of darkness. Fear of darkness is what? अंधेरे से ना डर लगता है निक्टोफोबिया में, प्लीज राइट इट डाउन। द आंसर इज दिस, फियर ऑफ डार्कनेस इज निक्टोफोबिया। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है? या फिर बाकी के फियर्स को क्या बोलते हैं वो भी है, ठीक है? वेट अ बिट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। चलो लेट्स डार्कनेस, एक्सप्लेनेशन ऑफ फियर ऑफ डार्कनेस, तो बी अ फियर ऑफ बर्थ। अभी निक्टोफोबिया फियर ऑफ बर्थ, ऑर्थो ऑर्निथोफोबिया फियर ऑफ एनिमल्स, ऑर्निथोफियर को क्या बोलते हैं? फियर ऑफ एनिमल्स। जूफोबिया फियर को क्या बोलते हैं? लाइट की फियर को बोलते हैं फोटो, लाइट फियर, ठीक है? डार्कनेस की फियर को क्या बोलते हैं? निक्टोफोबिया। बी, बी फॉर बॉल।
बर्ड्स की फियर को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफोबिया। हाँ, इट इज लाइक दिस। ऑर्निथोफोबिया। ओके, what is called the fear of animals? एनिमल्स से कौन डरता है? उसको बोलते हैं जूफोबिया। और जो लोग से डरते हैं ना, हाँ, बहुत कम लोग को होता है फोटोफोबिया। It means like not photo, ठीक है? फोटो का मीनिंग होता है that phobia is called as photophobia. Okay, the fear of darkness is called as nyctophobia. Fear of birds is called as ornithophobia. Phobia means एनिमल्स के फियर को बोलते हैं जूफोबिया एंड लाइट के फियर को बोलते हैं फोटोफोबिया। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इफ यू आर डन विद राइटिंग इट, following diseases caused by the virus: malaria, rubella, leprosy, or tetanus. Please think about it. I know you know the answer. ठीक है, अभी आप लिप्रेसी नहीं जानते होंगे ना। लिप्रेसी में क्या होता है, स्किन है ना पूरा रोटन होने लगती है। रोटन होना मीन्स क्या होना, कि स्किन में पूरे ऐसे लाइक धब्बे धब्बे आ जाते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, और कोई चीज रोट हो जाती है, सड़ती कैसे। दैट्स हाउ लिप्रेसी इज कॉल्ड। दैट इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू वायरस। ओके, tetanus is a bacteria, ठीक है? It is a bacterial infection. TT, we took injections of TT when we have injuries, है ना? So tetanus is this. Tetanus is TT. Rubella is a virus, yeah. Rubella is a virus, ठीक है? मैंने बोला रुबेला स्टार्टिंग के फर्स्ट स्लाइड में बोला था, मिजल्स रुबेला। मिजल्स रुबेला इज काइंड ऑफ, मिजल्स इज अ डिसीज, रुबेला इज अ वायरस। मलेरिया किसकी वजह से होता है? अभी प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड में देखा कि मलेरिया किसकी वजह से होता है? एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से। तो मलेरिया कैन बी कट आउट, लिप्रेसी कैन बी कट आउट, टिटेनस as well as also can be cut out. So the option left here is rubella. The answer is this, rubella. ठीक है, rubella is a virus.
Which of the following diseases is caused by severe deficiency of protein? इनमें से कौन से डिसीज होता है सीवियर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से? ठीक है, द आंसर आई टेल यू. Kwashiorkor. Kwashiorkor. This disease is caused by deficiency of proteins in your body. If you are not taking enough supplements or not supplements, enough intake of food or good food which contains high amount of protein or high amount of vitamins, high amount of minerals, so your body can cause this kwashiorkor kwashiorkor disease. ठीक है, या फिर kwashiorkor condition के थ्रू आ सकते हैं आप आपका बॉडी से. द राइट ऑप्शन हियर इज दिस. ये भी बाकी के डिसीजेस भी होते हैं. इफ यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक प्रोटीन, प्लीज चेक आउट द चार्ट आई हैव गिवन यू इन द स्टार्टिंग. उसमें आपको पता चल जाएगा कि what kind of proteins can what kind of deficiencies of proteins can cause which disease. ठीक है, तो ये डिसीजेस भी उसमें दिख जाएंगे. आप ये डिसीजेस दिख जाएंगे तो इनमें तो स्पेसिफिक प्रोटीन के डिफिशियंसी के कंडीशन की वजह से ये डिसीजेस होते हैं, राइट? So the answer right here is this. Okay. Shall we move to the next? Find is an example of hepatitis is caused by hepatitis अभी डिस्कस किया था. Hepatitis is caused by hepatitis वायरस की वजह से. ठीक है, there are different types of hepatitis. Hepatitis B, hepatitis C. These are all what caused by viruses. ठीक है, the right option here is virus. Which of the following is a communicable disease? अभी इनमें से जो अननोन डिसीज दिख रहा है वो कौन सा? अल्जाइमर्स. अल्जाइमर्स कंडीशन में क्या होता है? दिस इज अ मेंटल कंडीशन वेयर यू फॉरगॉट थिंग्स वेरी यूजुअली. ठीक है, अल्जाइमर्स में क्या होता है? लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी. मतलब एक चीज को जो याद रहनी चाहिए वो हम लोग भूल जाते हैं. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अल्जाइमर. ओके, मीजल्स, रूबेला, अस्थमा, डायबिटीज, अल्जाइमर्स. अस्थमा, डायबिटीज और अल्जाइमर्स ये कोई कम्युनिकेबल डिसीज है क्या? Okay. तो इनमें से कौन सा? मिजल्स, रूबेला कॉज ड्यू टू वायरस. ठीक है, और ये क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है. ओके, the right option is your option A. Measles rubella is kind of communicable. The font is so nice, by the way. Okay. अस्थमा, डायबिटीज, अल्जाइमर्स कभी आपने एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होते हुए सुना है क्या? These are not communicable diseases. This cannot be happen to one person from one person to another person due to touching, due to using his stuff, using his utensils, using his clothes. ये सब उसकी वजह से नहीं होता है, ये किसकी वजह से होता है? ठीक है, ये these are non communicable diseases. All of these are non communicable diseases.
ये अगर आप किसी को डायबिटिक पेशेंट अगर किसी को हाथ लगाएगा, किसी के कांटेक्ट में रहेगा, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है कि उसको डिसीज हो जाएगा, ठीक है? नहीं है ना। These are non-communicable disease, and measles rubella caused due to virus can be communicable. Okay, the right option is option first, measles rubella. रोटावायरस वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट व्हिच डिसीज? इनमें से कौन सी डिसीज के लिए रोटावायरस वैक्सीन यूज की जाती है? वन ऑफ द कॉमन डिसीजेस इन आवर इंडिया, कॉमन था, नॉट, ठीक है, इसका वैक्सीन सबसे पहले शुरू किया गया था। ओके, द ऑप्शन इज फर्स्ट वन, पोलियो। पोलियो में क्या होता है, आपका कोई भी पार्ट बॉडी का डिसेबल हो जाता है, डिसेबल इन द सेंस वर्क करना बंद हो जाता है, इवन दो वो क्या आपके बर्थ के टाइम पे प्रॉपर चल रहा था, इट इज गुड, बट बाद में वैक्सीन ना लेने की वजह से क्या हो जाता है, वो पार्ट डिसेबल हो जाता है, सो दैट इज पोलियो, ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन इसके लिए दी जाती है पोलियो के, प्लीज राइट इट डाउन, रोटा वायरस वैक्सीन विथ पोलियो। Rotavirus vaccine is given to stay away or be safe from the polio. Let's move to the next if you're done with writing it. The name of the which disease among the following means evil's influence of the stars. The disease is influenza. Okay, I'm telling you the answer because these are new names. The name of disease among the following which means evil influence of the stars. We influence आया तो please try to remember कि influenza. ठीक है, influenza virus is a common virus which can cause you a fever, which can cause you a cold, ठीक है, और भी severe disease, fatal disease भी होते हैं influenza virus की वजह से, ठीक है, but normal conditions in which this virus cause the disease है fever, cold, ठीक है, the answer is influenza. It can also be known as the evil influence of the stars. Note it down. Okay. Which one of the following diseases caused mainly by the deficiency of vitamin? Will you please check and tell me इनमें से कौन से डिसीज इनमें से कौन सा डिसीज होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से? Please don't search it on, okay? Look it in your given chart. Refer these charts. तो चार्ट में कितने सारे चीजों का आंसर है? So I know you got it. The right option is your scurvy. Scurvy disease होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से। विटामिन सी किससे मिलता है? जो स्टार सब्सटेंसेस होते हैं ना, जैसे कि आपका संतरा, and then lemon, these kind of fruits जो होते हैं खट्टे, उनमें से आपको क्या मिलता है? विटामिन सी, ग्रेप्स,
स्कर्वी डिसीज होता है इफ आपको डिफिशियंसी हुआ विटामिन सी का, ठीक है, द राइट ऑप्शन हियर इज स्कर्वी। राइट है, आपने पहले ही लिखा हुआ है, सो देयर इज नो नीड टू राइट। Xerophthalmia is caused due to the deficiency of vitamin। उसमें दिया नहीं है ना, प्लीज ऐड इट। उसमें दिया नहीं है, प्लीज ऐड इन द चार्ट की विटामिन ए के डिफिशियंसी की वजह से जीरोफ्थैल्मिया होता है, तो चार्ट में आई गेस दिया नहीं। The right option here is this vitamin A. This can cause you xerophthalmia. Xerophthalmia is a condition where your blood circulation is obstructed by something, that is xerophthalmia. Okay, it is caused due to vitamin A and the skin color got diminished. यहाँ पे पेल का होता है, हो जाता है स्किन, एंड देन आंखों का विजुअल भी प्रॉपर नहीं, आई मीन पुअर विजन हो जाता है। These are the symptoms of xerophthalmia. ठीक है, let's move to the next question. I hope you are understanding. Pernicious anemia is caused by the deficiency of vitamin। अब ये pernicious anemia जो है ना, इज अ ब्लड डिसीज। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ये ऐड में चार्ट कर ली, ये चार्ट में ऐड कर लीजिए प्लीज। विटामिन बी 12 का डिफिशियंसी की वजह से आपको पर्निशियस एनीमिया डिसीज होता है। ठीक है, which of the following disease is not transmitted from transmitted, it is transmitted transmitted from one person to another। अभी इनमें से कौन सा डिसीज ऐसा है कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं होता है? अगर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, आपने सुना होगा तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, there are some communicable diseases and non-communicable diseases, or it can be called contact or non-contact diseases। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, cirrhosis, hepatitis B and syphilis are communicable diseases। ठीक है, या फिर ट्रांसमिट हो सकता है। बट some of them are जो ट्रांसमिट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इनमें से कौन से ऐसे हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं एंड देन ट्रांसमिट नहीं हो सकते? तो पूछा कौन सा है ट्रांसमिट नहीं हो सकते, वो पूछा।
इनमें से जो सिरोसिस डिसीज होता है ना, तो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ओके। बाकी के डिसीजेस ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय सम कंडीशन। जैसे कि क्या होना चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आनी चाहिए, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट, या फिर ब्लड ट्रांसमिशन ऑफ सलाइवा, so they can cause these kind of disease. ठीक है, तो it can be spreadable, but cirrhosis is not a spreadable disease. Understand? Which of the following can be diagnosed with a Widal test? अभी इनमें से कौन सा डिसीज ऐसा है कि जो वाइडल टेस्ट से डायग्नोज किया जाता है? अभी डायग्नोज मतलब क्या? ट्रीट किया जाता है। ट्रीट इन द सेंस क्या करना? ट्रीट, डायग्नोज करना मतलब उसका लाइक उसको ट्रीट करना, दैट मीन्स डायग्नोज करना, ओके। सो typhoid fever can be diagnosed with Widal test. Okay, so the right option here is typhoid fever. It can be diagnosed with a Widal test. Let's move to the next question if you are done with writing it. Let's move to the next question. Okay. Okay. Which of the following is caused by the virus named varicella zoster? इनमें से कौन सा ऐसा डिसीज है जो वेरिसेला जोस्टर के वजह से, इट इज अ वायरस। ये आपने पहली बार सुना होगा, वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से आपको क्या होता है? चिकन पॉक्स। ये चिकन पॉक्स कॉज करता है। चिकन पॉक्स दैट मींस व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट? आपको हाई फीवर होता है, कभी कभी चिकन पॉक्स इनसाइड आपके थ्रोट में भी आ जाते हैं, जिससे फूड कंज्यूम करने में प्रॉब्लम आता है, स्वॉलिंग करने में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। एंड देन आपके जो स्किन पे ये आने लगता है, एक्ने टाइप्स, ऐसा लाइक पानी होता है उनमें, बट वो एक्ने टाइप्स आने लगता है, ठीक है। तो वो थोड़े से रैश करते हैं, एंड देन दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इट। वो कहीं पे पूरे आपके बॉडी पे आ जाता है, एंड हाई फीवर होता है तब के टाइम पे। तब चिकन पॉक्स को लोग देवी बोलते हैं, ठीक है। These are some myths. Okay, so thank you. We are done with today's session. Thank you for your coordination. Thank you so much. We are done for today. Thank you, guys.